नमस्कार नमस्कार, बैठ जाइए बैठ जाइए। सर अरसा हो गया, ये नहीं देखा था बड़े दिनों से। थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू सो मच, मुझे नहीं, थैंक यू सो मच इनको। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर से बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले द लीडिंग लेडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, द एवर सो चार्मिंग, द एवर सो गॉर्जियस एंड ऑफ कोर्स द वेरी टैलेंटेड तब्बू। ओहो, मैम वर्दी में नहीं हो तो बोल सकता हूँ, कह ढा रहे हो आप। माय गॉड, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले ये रिस्पॉन्स, ये हल्ला गुल्ला। अमेजिंग, ये रिस्पांस देख के थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, मतलब एक्साइटमेंट हो रही है। राइट ऑलराइट, थैंक यू। आई थिंक ये पहला ट्रेलर लॉन्च है Yes. जो IMAX में हो रहा है, 3D में। एंड इसके लिए हमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ी क्योंकि डेडलाइन थी हमारी एंड वी हैड टू फिनिश। राइट। सो आई वांट टू थैंक माय टीम दैट उन्होंने इतनी सारी भागदौड़ करके ये सब किया। इट्स ग्रेट। आई थिंक विजुअली कुछ और हो जाता है IMAX में और 3D में। कैसा लगा आप लोगों को? थैंक यू। टॉकिंग अबाउट विजुअली सर, कोई चीज विजुअली कितनी खूबसूरत दिख सकती है शिवरात्रि पे। ऑफ कोर्स फिल्म से थोड़ा बाहर का पूछ रहा हूँ, वो जो आपने पिक्चर्स डाली थी, मैं अभी बात कर रहा था कैसे हम सब ने वो डिविनिटी फील की। मुझे बताइए, बीच में आपकी बोट है और वो जो बाकी सब लोग थे, वो सेट के थे या नहीं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमने 2 दिन पूरी प्लानिंग की, रिहर्सल की। और वो जो महाआरती होती है वो सिर्फ 10 मिनट 12 मिनट की होती है। और जो आसपास जितनी भी बोट्स थी वो सब जो भक्त लोग हैं और जो दर्शन करने आए हैं वो जेन्युइन लोग हैं। राइट। और उसके बीच हमने शूट किया। सो इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी डिवाइन। राइट। एंड आपने कहा था इसको कैसे डिस्क्राइब करूं, हम सब भी बिल्कुल चुप हो गए थे। तब्बू मैम, आपके लिए ये सवाल, मुझे प्लीज बोलिए, हमने पहले लास्ट टाइम यू टोल्ड अस अबाउट अजय देवगन द डायरेक्टर दैट वेंट वायरल, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि उन्होंने सही एकदम बता दिया कैसे करते। अभी बोलिए, यू नो द केमिस्ट्री दैट वी सी आप दोनों के बीच, और फिर वो स्क्रीन पे जो दिखता है उसे देख के इट सीम्स कि हाँ भाई सब कुछ बड़ा इजी पीजी सा है, बड़ा आराम से हो जाता है। बट हाउ डिफिकल्ट इज फॉर an Ajay Devgan to convince you for a movie, or it just happens? It's not difficult at all. He just has to call me and say, "Okay, I want you to do this movie," and I'll just do it without Right. even asking what it is. Right. So यहाँ जो किया है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। दोनों मैंने तो एकदम आंख बंद करके, मतलब I entered this film with my eyes closed. I knew कि एक्शन बहुत करना है, और ये एक्चुअली हर चीज को इजी कर देते हैं ना, और बोलने में भी इतना नहीं, हाँ तुझे एक्शन करना है, बस उतना ही। ओके, बट वहां जाके जो मतलब करना पड़ा, बट द थिंग इज दैट ही एक्चुअली मेड इट सो इजी। राइट। इतना आसान बना दिया, क्योंकि ये तो मतलब नींद में भी एक्शन कर सकते हैं, इनका बाएं हाथ का खेल है। तो मैं आई न्यू कि मैं अपने आप को कंप्लीटली इनके हवाले करके ट्रस्ट कर सकती हूँ कि मुझे एक स्क्रैच फ्री मुझे घर भेजेंगे, और वही उन्होंने किया। And I want एक to स्क्रैच thank- जरूर आया था। वो तो एक नजर बट्टू होना जरूरी है ना हर फिल्म बिल्कुल में। बनता है, बट बनता बहुत है। मुश्किल था बिकॉज आपका पूरा एक्शन करना आपके हाथ के बैलेंस पे होता है और इनका एक हाथ बंधा हुआ था थ्रू आउट, तो इट वाज वेरी टफ। तब्बू, आपने एक्शन की बात की है, तो एक्शन के लिए कितनी तैयारी की यहाँ पे, क्योंकि काफी अलग दिख रही है आप यहाँ पे एक्शन करते हैं। मैंने ऑनेस्टली कुछ तैयारी नहीं की, जो कुछ किया अजय सर ने और सारी एक्शन टीम ने मुझ पे मेहनत की, और एक्चुअली मेरे लिए बहुत आसान बना दिया, क्योंकि एक्सपर्टीज जो इन लोगों को है एक्शन में, आई डोंट थिंक किसी और को है। तो मुझे वही करना था जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिलते थे, और मैं अंधाधुंध कर जाती। सो रियली आई बट आई न्यू दैट आई वुडंट हैव टू prepare, because whatever I do, it will be less than what I would be required to do on this film. अजय, आपके लिए त्रिशूल से एक्शन करने का कैसा अनुभव रहा? आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा मुश्किल भी था, थोड़ा नयापन भी था उसमें, तो डिजाइन भी करना था, उसको एग्जीक्यूट भी करना था और उसको परफॉर्म भी करना था। तो आई थिंक इट वाज वेरी नाइस। और एक सेंसिबिलिटी मेंटेन करके रखनी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हाथ में आपके त्रिशूल है। I wanted to ask you that from Yumi or Hum to Bhola, what is the evolution of yourself you have seen as a director, the changes you have observed? I really don't know. I mean, you grow every day, and you learn from your mistakes, other people's mistakes, other people's good work, your own work, and you can't pinpoint a thing.
but you keep growing and you keep learning. कैसा अवतार अजय सर का आपने देखा है जो अभी 3D में हमने भी देखा है? आई थिंक इस रोल के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टर इतना फिट होता जितना ये फिट होते हैं। और आई थिंक इनका जो एक सारा इमेज और इनकी जगह है वो खास तौर पे डिफाइन होती है इंटेंसिटी से। इसका ये मतलब नहीं कि ये दूसरी कैरेक्टर्स को उतना सूट नहीं करते, लेकिन जैसे ये हैं, जैसे ये रियल लाइफ में भी है, तो उन्होंने कैरेक्टर्स भी ऐसे चुने हैं और वो उनकी बहुत स्ट्रांग पहचान है और बन गई है। ये इतना मैं कह सकती हूँ। You enjoy the process of working. You can't segregate between acting and direction because it's all one. You enjoy in totality filmmaking. You enjoy waking up in the morning, going to work, and both are a part of it. So it's a combination. You can't enjoy one without the other, and the other without the previous one. What was the thought process behind it? Was it something you went to the drawing board and consciously you had to make those action pieces? See, for one, the first thing when I make an action film, my biggest first attempt is, without naming, I would say most of the films I see in our country, they have fabulous action, but they're always inspired, or you can have a resemblance to some sequence of an Hollywood film or a European film or some film or the other. So especially when action is concerned, my whole intention is that create something new, execute it in a different way. That's why in Shivaya also and in this also, people say there are shots which they really don't know how they must have been taken, and then plan it, and then it's a whole process. But it starts basically with we need to create something new, our own, and keeping it stylized, but keeping it very, very Indian. Not westernizing it completely. What are the safeguards? Look, it's like our job is difficult and easy also, I would say. Mr. Bachchan, from where he started, and then later when we started, at that point of time, we used to do action. There were no mattresses, there were no safety measures, there were no cables. We've injured every part of our body. Mr. Bachchan has done shots which you can't even imagine. I remember him getting injured during we were doing Major Saab also, which he insisted we had to jump from something. It must be 30 feet, 3 floors high, and I told him, let's not do the shot. It's a night sequence. We can work it out with duplicates, and we both were supposed to jump together, and he insisted, let's do it, and he had an injury then also. So it's that enthusiasm. But now I would say. Now things are much more easier. I think there are cables, there are a lot of safety precautions. There are ambulances on set, there are doctors on set, there are paddings and lots of stuff. So it's become relatively much easier, thank God, because while we are aging, things are getting easier also. Yeah, so there is a lot of it. It's like, it's like also driving a car. You can have an accident anytime, but you try to be safe all the time. So it just happens sometimes. We try to take all the safety measures, but there are risks to it, definitely. Tabbu, is it scary though? Well, if you think about it, it is. There's always 1% chance of you getting injured. And actually, in fact, even before you asked this question, I wanted to maybe conclude whatever by thanking my entire action team for keeping me safe, for keeping everybody safe. And this is exactly what I wanted to talk about, that it's really, really not easy to execute an action film. It's not easy to physically achieve so much and do so much and just do it actually there in real time. You need a set of really dedicated people and who care about people's lives, who will protect you and make you do the right things, and not make you do what you should not be doing. And I had a fantastic team, and I want to thank each person of that team. Yadavji, Suri, our team from overseas, Rama, him, most importantly,
everybody who did the cabling, and people who were our body double sometimes. So yeah, it is scary, but now my fear has really reduced by a huge percentage. I enjoy it now. डरने की बात नहीं है, लेकिन काफी हड्डियां बॉडी की टूटी हुई हैं और काफी इंजरीज हैं, और अब रोज सुबह जब उठते हैं तो वो ये सब याद आती है जब दर्द होती है तो है, बट एज आई सेड इट्स पार्ट ऑफ द गेम. Yeah, so A for one, you have to plan it, you have to shoot it according to 3D. There's a different technique to it, and then it's a whole process, and then the whole team comes in from IMAX, and they do a fabulous job, and the visual they create is outstanding. इस ट्रांजिशन को कैसे लेती हैं? बहुत सटल सा एक मैसेज देता है. मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ इस कैरेक्टर को लेके, और द फैक्ट दैट आई वाज चोजन फॉर दिस रोल, मुझे बहुत गर्व है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्टेप अप है, प्रोग्रेस है मेरे कैरेक्टर्स में. एंड जैसा आपने कहा, जैसा हम महिला अफसर को देखते हैं और महिलाओं को देखते हैं और ये सिर्फ जख्मी नहीं होती, बल्कि जख्मी होने के बाद भी, इनफैक्ट पूरी फिल्म में मैंने एक स्लिंग पहना है, इसलिए मेरे लिए ये एक्शन और भी ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे पास अपने दोनों हाथों का सपोर्ट नहीं था एक्शन करने के लिए, भागने के लिए भी. तो ये कैरेक्टर एक्चुअली ओरिजिनल में मेल एक्टर नारायण राम सर ने किया था, तो उसको चेंज करके इन्होंने महिला कर दिया. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब प्राउड मोमेंट है, मैं कह सकती हूँ. How are you looking at that as an industry person, as someone who has been there for 30 years as a producer? I don't know. Right now, I'm not thinking about release. I'm thinking about concentrating and finishing on the quality of the film, because the post-production, little bit of tweaks or whatever's left, we are doing. So I don't know when I'll start thinking about the release. But yeah, we just had Pathan, which did That's right, yeah. fabulous business. I mean, extraordinary business. So just fingers crossed that all the next releases would do very well, and then Bola will come and also do very well. Absolutely, that's the expectation. Can you please spill some beans on If it? you think I've kept it a secret, do you think I'll give you an answer? No, but I'm just that's what I'm asking. Can you please, like, So why are you asking? Right? Yeah. So can we expect some more surprises? I don't know. You see the film. Surprises means you don't ask. You see, you get them. What have you explored the changes in the Hindi remake as a director? There are a lot of changes. When you see the film, I mean, we'll talk about that. The characters have been changed completely. The base idea is similar, but otherwise you would see the whole treatment, the way the world is completely different. The emotion is completely different. So whatever I felt should be different for me, I've done that. Tabbu, I want to ask you, like, we meet a lot of female actors these days for last many years. They want to do like solo action. They want to do a lot of action movies. Have you ever thought about it? Did you ever think like in the past? That's the problem. When they think about doing solo action, you can't fight with midair, na? You have to do action with somebody or the other. You can't think about doing solo action. You're the main protagonist as an action. मैं ऐसा कभी सोची नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो किया है, आई डोंट थिंक मैंने कभी सोचा था कि मैं इस लेवल का एक्शन कर पाऊंगी, एंड आई वांट टू थैंक हिम फॉर दैट. इन्होंने बहुत साल पहले मेरे साथ काम किया था, कच्चे धागे, उसके मेन विलन थे ये. बहुत सालों बाद हम काम कर रहे हैं साथ में. इसका जवाब इनको मिल ही गया, और ये सवाल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे से पूछा जाए कि खाना कैसा लग रहा है. अच्छा ही लगेगा. एक मेरे कलीग ने लोकेश कनगराज का नाम लिया, और उनकी मैंने दोनों फिल्में देखी है, कैथी और विक्रम. तो जो मेरा एक अनुभव एक बतौर दर्शक, ना कि सिर्फ जर्नलिस्ट, वो ये रहा है कि ये दोनों फिल्म एक्शन है, जो मेरा एक पर्सनल फेवरेट जॉनर है. बट इन दोनों फिल्मों की जो आई थिंक खूबियत है, और जो शायद भोला में भी रहेगी, कि कैसे जो उसकी प्राइम कहानी है वो एक फैमिली स्टोरी है. जैसे इसके अंदर एक बाप बेटे की, मैं पहले भी कहना चाहता था कि जब आप ट्रेलर देखते हैं तो हम ज्यादा कहानी खोल नहीं सकते. हाँ. तो इसलिए आपको एक्शन ज्यादा नजर आ रहा है. फिल्म में एक्शन बहुत है, लेकिन जो एक्शन, कोई भी एक्शन बिना किसी इमोशन के वर्क नहीं कर सकता. तो द मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्म इज इमोशन, और जो कहानी है.
बल्कि इसमें और ज्यादा ट्रैक्स ऐड है, तब्बू के भी ट्रैक्स एडेड हैं जिसमें एक अलग इमोशन है. सो हमेशा जब आप एक कहानी सोचते हैं तो उसका इमोशन पहले सोचते हैं. अगर आपके पीछे एक इमोशन हो, आप किसी को मारे हैं तो लोगों को मजा आता है, वो सीटी ताली मारेंगे. अगर बिला वजह आप किसी को मारेंगे तो आई थिंक किसी का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा एक्शन हो. तो सबसे जरूरी चीज होती है कि आपका इमोशन सही है कि नहीं, और आपका दिल अपनी सही जगह पे है कि नहीं. और मेरे ख्याल से यही इमोशन जो है, मतलब जो ना सिर्फ मास ऑडियंस बट फैमिली ऑडियंस को भी आकर्षित करेगा इसी फिल्म में. आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मास एंड फैमिली ऑडियंस वेयर इमोशंस आर कंसर्न्ड. इमोशन एक यूनिवर्सल इमोशन होता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो. इमोशन हमेशा सेम ही होता है. एक बाप का बेटे के लिए, बेटी के लिए इमोशन, एक माँ बाप का फैमिली के लिए इमोशन, बच्चों का अपने पेरेंट्स के लिए इमोशन, जो भी इमोशन आप ले लें वो सब एक ही होते हैं, यूनिवर्सल है. ऑल द टेक्नीशियंस प्लीज कम ऑन. All right, the cinematographer of this movie, Asim Bajaj sir, is here, of course. Costumes, Radhika Mehra, Naveen Shetty and Divyang D'Souza ki. Action director, R.P. Yadav ji and Ramzan ji. Ramzan sir is not here. Writers, ladies and gentlemen, Amil, Sridhar, Sandeep and Ankush. Of course, NYVFX wala ko special thanks. And the editor, Dharmendra Sharma ji. Ek baar zordar taaliyan ho jaye. Of course, the entire crew is not here. But yes, the good wishes are always with us. This is Bhola. Hands to stay back because sir is going to come back. Come back और फिर कुछ और आप लोगों के संग. And yeah, thank you so much, all the wonderful people from the media.